इस तरीके का एक आप दुनिया तलाश कर रहे हैं. This is in a way इम्तियाज अली point 2. I'm enjoying this 2.2 a lot actually because there were so many stories over the years that I wanted to tell. When is it that Imtiaz Ali is going to take the plunge as far as directing a web show is concerned? As a director, I must be doing something which I have not done before. Market का goal भी मेरा goal है, but that's not my only goal. Right. You know, I'm always trying to do things that I feel I can do, and sometimes I do things that I feel I can learn something from, so that I can do the next thing better. जब बेचना शुरू किया ना तो लोग काफी एक तो सरप्राइज थे कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ. मुझसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. कईयों ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया. जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा. जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा. समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा. आज मेरे साथ में इम्तियाज़ अली जो कि जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है हमेशा कि वो ख्वाब पे समझौता नहीं करेंगे. कहानियाँ कहने का उनका जो शौक़ है वो एक पैशन है. एंड ही इज़ डिटर्मिन्ड टू कीप ऑन टेलिंग न्यू स्टोरीज. प्लेजर हैविंग यू बैक विद अस ऑन बॉलीवुड हंगामा. Thank you so much. Nice to meet you after a long time. जी बिल्कुल. It's always a huge pleasure and honor to meet you. And very happy with the evolution that you're having right now. जो आपका चाहे शी की बात करें या फिर अभी डॉक्टर अरोरा की बात करें कि जिस तरीके का एक आप दुनिया तलाश कर रहे हैं. एंड दिस इज इन अ वे इम्तियाज अली पॉइंट 2. आर यू एंजॉइंग दिस 2.0 rather point 2 क्या 2.0 is better. I'm enjoying this 2.0 a lot actually because there were so many stories over the years that I wanted to tell and could not, because many of those stories did not fit into those 2-hour duration that I as a film director or writer could work with. Now I've been given a duration and also a different kind of an attention, because that's what a digital medium has. Viewers with a different kind of an attention. So I can tell these stories. You will not believe this Dr. Arora की कहानी जो है ना, from the time that I was in college, I used to think about this, that what must be happening inside the clinics of these doctors, because the most advertised service in North India is definitely sex doctors. Yeah. Absolutely. Even Daryaganj and all of that. So वो मैं देखता रहता था. मैं सोचता था कि इतनी क्या प्रॉब्लम है यार नॉर्थ इंडियन लोगों को कि वो हमेशा सेक्स डॉक्टर का इतना कुछ प्रचार कर रहे हैं, इतना चलता है इनका, और इनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती होगी, इनकी प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, छोटे शहर में कैसे छुपाते होंगे उन प्रॉब्लम्स को. सो literally from that time I have been thinking about this story, and now that the digital revolution kind of has happened in our space, I'm able to tell it. जैसे आपकी फिल्मों में हमेशा एक हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है इसके बारे में, बात भी करी बहुत बार कि जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, सपोर्टिंग स्टार कास्ट जिसको कहा जाता है, विच इज़ मे बी नॉट रियली लाइक अ नाइस टर्म, बट आई थिंक कैरेक्टर आर्टिस्ट, गुड एक्टर्स, उनकी हमेशा एक बहुत अहमियत रही है. मैं तो बहुत बार ब्रिजेंद्र काला जी का जिक्र करता हूँ जब भी मेट का, एंड पीपल रिकग्नाइज हिम विद दैट पर्टिकुलर टैक्सी ड्राइवर सीन. वो एंड आई थिंक कमाल की बात है कि एक सीन से लोग उनको याद रखते हैं, चाहे पीयूष मिश्रा जी हों रॉक स्टार में. सो मेनी ऑफ द एक्टर्स इन योर फिल्म्स दे हैव बिकम मेमोरेबल. लेकिन मुझे लगता है कि नाउ यू आर फाइनली just getting a platform where you can present these actors as stars. Like Kumid Mishra is a star of Dr. Arora. Yeah. And it is so beautiful. Yeah, I'm very, very, very pleased about that. I always wanted to work with great actors. And even while in the prime roles, I wanted always great actors. Again, as I'm saying, the viewership is such of a digital platform that you like it, actually. There are many so-called character artists that are more popular on the digital medium, if you realize, than the so-called stars of film. Absolutely. You know, because it is oriented on character, it is oriented on performance and talent, and the way that the digital medium is supporting talent in acting is something incredible for me. Right. Now, जहाँ तक इसकी कहानी के बारे में, आपका exactly you're the creator of this Yes. show. So what exactly is your role in that? My role is that it is my concept. I'm the writer as well. I'm the primary writer. Great. Okay. There are a few other writers, but basically because of pandemic also, I had enough time, so I wrote everything. And also, क्या होता है ना कि यहाँ I'm a showrunner for this. Right. What I do is that the creative onus is on me finally. So everything happens. There are 2 directors. They are directing it because there's a lot of duration to be covered. But ultimately, everything has to be approved by me,
and in a way the vision has to be given by me. So I do what the director does in films before shoot and after shoot. That role I do. On the sets I'm not present because if I'm there then there's always a conflict because मुझसे भी रहा नहीं जाएगा और वो दूसरे I'll be stepping on the director's toes, but we work in tandem. So that's what I do. ओके ना बहुत बार जैसे होता है कि स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है इंडस्ट्री में सर्टन डायरेक्टर्स दे आर नोन के दैट दे मेक फैंटास्टिक पीरियड ड्रामास इम्तियाज़ अली का होता है कि दैट अगर खूबसूरत मीनिंगफुल रोमांटिक स्टोरीज अगर कहनी है तो इम्तियाज़ अली इज़ द गो टू पर्सन फॉर दैट लेकिन ये जैसे चाहे वो शी हो चाहे वो डॉक्टर अरोरा क्या ये कह सकते हैं कि आप एक तरीके से एक जो ब्रेकिंग शैकल्स एंड you're telling stories which in a way maybe are not expected from you. अगर शी की बात करें तो उसमें एक sexual element है which is very very raw for example. Sure. that the way the protagonist is discovering. यहाँ पर एक sex screening के बाद है and it's as real as it gets. This is something that many people would not really associate with Imtiaz Ali in general. Well, I'm glad about that. The fact of the matter is that I would associate such stories with me as much as I would associate any other. And many of these stories, including Highway, which I don't believe is a regular good-looking love story, I had thought of these stories much before the ones that got made earlier. यानी कि सोचा ना था और जब भी मेट के पहले मैं इन stories के बारे में सोच रहा होता था. And but it just so happened, and that was quite like I didn't know why it happened like that. The first so-called romantic story I wrote, which was Socha Na Tha, it just got highlighted, green-lit, and got made very soon. After that, the story that, and while that I was writing many stories, and there was Rockstar, but also there was Jab We Met, and also there was Cocktail, and all these were written in that time. And it started rolling like that. I think people expected that मुझे इस तरह की कहानी करनी चाहिए और मेरे पास थी भी तो मैं उन कहानियों को करता रहा. But I'm now going back to something which I feel is originally mine as well, as much as anything else is. So, but I'm very happy that you're saying this. This means that people might get something that they don't expect from me. जी एक आपका एक बहुत ही यूनिक सा एक आई थिंक एक आपकी जर्नी रही है एंड बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि लोग परसीव करते हैं और लेकिन जैसे कि आप जिस चीज़ को आपने हमेशा कहा अपने इंटरव्यू में मैंने देखा है कि दैट इट्स लाइक अ पैशन फॉर यू. जब आप फिल्में बनाते हैं तो उसमें जर्नी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. द जर्नी ऑफ मेकिंग दैट फिल्म, ब्यूटीफुल लोकेशंस, खाने का आपको बहुत शौक है एंड you like being with the team and being with people and getting them along. Now box office जो होता है वो एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है. आपकी फिल्में जो हैं फिर वो बॉक्स ऑफिस पे भी चलने लगी. फिर अब आपको एक वो भी प्रेशर इंडस्ट्री डाल देती है कि कि नेक्स्ट फिल्म आपकी जो है वो इससे बड़ा बॉक्स ऑफिस आपका होना चाहिए जो भी. विद OTT वो एक डू यू फील अ सेंस ऑफ लिबरेशन कि वो एक फ्राइडे का जो हर तरीके के प्रेशर्स डाले जाते हैं कि यहाँ पर निज़ाम में ये होगा, वहाँ पर दिल्ली में ये होना चाहिए. Does that in a way, do you find it liberating in a way? You see, I have become so shameless, Faridoon, that I don't even care what people say on the Friday of a film release. Right. Don't get me wrong, I'm trying my best for the film to be successful on the Friday. Right. मगर एक तरह से आप कह लो कि एक मस्ती है कि ठीक है कोई बात नहीं. उस प्रेशर में रह करके भी आपको इजी रहना पड़ता है in order to enjoy this journey. Right. And some people like me are shameless, so they manage it very well. So I don't feel that change. Because वहाँ पर भी मुझे शर्म नहीं आती because सबके अपने गोल्स होते हैं और मार्केट का गोल भी मेरा गोल है but that's not my only goal. Right. You know, I'm always trying to do things that I feel I can do, and sometimes I do things that I feel I can learn something from so that I can do the next thing better. Because my ambition is to be like Ved Vyas, you know, to tell a story that is that complicated but to tell it so simply. Wow, that's amazing. Okay, now जब हम आपके एक डॉक्टर अरोरा की बात करें तो इत्तेफाक की बात है I was speaking to one of the senior members of the platform outside, and so they were asking me that she was asking me that do you watch our platform, do you watch content on our platform. So मुझे उनको explain करना था कि that yes I do. So then I told her कि that मैंने इस पे Masters of Sex भी मैंने सारे seasons मैंने देखे हैं. Then suddenly I realized कि डॉक्टर अरोरा भी जो है it is something on the गुप्त रोग on the similar lines because say Masters of Sex it has like that element of sex but it is talking about the disease factor and the fact that how
evolution is important to just do away with the shame element, because that shame element really prevents people from a lot of things and keeps them unhappy. Sure. And something similar we are noticing in Dr. Arora as well. Correct. That way. तो ये अभी हमारे वहाँ क्या होता है कि इट्स अ वेरी थिन लाइन, ये ट्रेजेक्ट्री जो होती है कि व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मैटर्स या सेंसुअल मैटर्स, वो जजमेंटल फैक्टर वो इमीडिएटली आ सकता है. बहुत से लोग इमीडिएटली वो एक जजमेंट पास कर सकते हैं कि ये टिटलेशन के लिए हो रहा है. जी जी. लेकिन वो एक बहुत ही क्रिएटिवली भी और एक समझदारी से भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. वो थिन लाइन को क्रॉस करना या ट्रेड करना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, जब मैंने लिखा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या लिखना है और क्या बनाना है. बट ये जरूर हुआ कि जब मैं लोगों को मतलब कि जब बेचना शुरू किया ना, तो लोग काफी एक तो सरप्राइज थे कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ. मुझसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. दूसरी बात ये कि दे वर नॉट श्योर विच वे इट विल टिल्ट, यू नो, एंड देन फॉर दैट यू एक्चुअली नीड टू सी द शो, बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज अ कॉमेडी, दिस इज अ light-hearted look at life. I don't want to make it very serious, right? बट फिर उनका ये था कि उनको लग रहा था होगा शायद कि ये सेक्स डॉक्टर है तो कुछ स्लीजी होने वाला है इसके अंदर, या कुछ बी ग्रेडिश होने वाला है इसके अंदर, स्लैपस्टिक होने वाला है. बट आई वेंट विद द क्वर्क्स ऑफ द टाइम. आई वेंट विद the true genuine problems of people that are in this situation, but I've presented it with humor so that it's light and it is palatable. Right. So I did take some time in order for the market to understand what the hell this Dr. Arora is. Right. Honestly. तो कईयों ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा ऑड लग रहा है. But I must say that the moment I spoke to Danish and at that time Saugata in Sony Live, they got it. They said हमने भी देखा है ये इश्तेहार, you know, दीवारों पर लिखा हुआ, और हम समझ रहे हैं exactly what you want to say. Please give this show to us. Let's work this one together. इतनी मोहब्बत से उन्होंने लिया है ना, वो बिल्कुल समझ गए. और तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये शो का को बाहरी रूप से देखो ना तो काफी इंट्रीगिंग है कि ये है क्या. So I'm glad it is on Sony, honestly.